Hi guys, Smriti this side. Welcome back to TJP. As you all know, we are continuing with the Topper Talk series wherein we have students from prominent colleges coming over the show and telling us about how did they prepare for the exam, tips and tricks, and what were the experiences. So continuing the series today on board we have Naman Khandelwal and Bhuvan Vadva with us. Hi Naman, hi Bhuvan. Hi Hello, Smriti. Smriti. Guys, we'll start with a short introduction of you. Bhuvan, please go first. Hi guys. My name is Bhun Udwa. I am currently pursuing economics honors from Unstad College. I am basically born and brought up in Ganganagar, Rajasthan. Apart from CUT, I also gave various other entrants and secured All India rank 77 in MINSET. Currently, I am in Unstad College. That's commendable. Naman. So, hello everyone. My name is Naman Khandelwal, and I am also from Rajasthan, and currently I'm in Sahi Sukhdev College of Business Studies. So yeah. Okay. So, guys, this video is going to be GT oriented. So, you all have completely aced CUET, we know that, but specifically in this video, we are only going to talk about the GT part, that's the general test part. So, please tell our viewers how much marks and percentile did you score in CUET, in GT specifically. Bhuvan. I scored approximately 245 marks, which was 98.8 percentile. And I scored 254 marks, and I got 99.28 percentile. We like to tell our viewers that the percentile and the marks differ from slot to slot. So for me, I scored a 99.2 percentile in general test and I had a score of around 268. But as Naman and I have the same percentile, but our score varies. So the percentile and the marks differ from slot to slot. Guys, did you lose marks? Like there was the first time they released the answer key. You might have calculated your scores from that. And then they released the normalized scores. So was there a reduction or an increase of marks, Naman? In my Continue. So there is a minor change plus there's a plus two three marks I have got added. Bhuvan? In my case, there was not a like very big change in my GT marks, but my maths marks were reduced by approximately 45 marks. My raw score was 150 plus, and I get approximately 110. So, for me, I lost around 10 marks. My slot was on 20th of July. So, again, it differs from slot to slot. People in the August slot, they had less marks and more percentile because I guess the paper was a little difficult in the August slot and when we compare to the July slot. So, talking about CUET, how did you actually get to know about CUET? We'll start with Naman. ओके सो सीईटी का हल्ला तोड़ ही रहा था फरवरी से सो मैं पहले से ड्यूजेट की प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी सीईटी का आना इससे चीजें आसानी हुई है मेरे लिए तो कि ड्यूजेट एक उसमें लेवल बहुत हार्ड होता है बजाय सीईटी तो बहुत बेसिक लेवल था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई सीईटी से Bhuvan. In my case, basically like Naman, I was also preparing for DUJET from my class 11th, so it was not a big deal for me to give COT. Because as we know that the syllabus of COT is same as of DUJET plus of our boards, so it was like not a big deal. So it's a stereotype कि बोर्ड्स में तो अच्छे मार्क्स लाने ही होते हैं तभी यू गेट अ गुड कॉलेज सो हमारे में ये स्टेरियोटाइप हटाई दिया था आज इज अ वेरी स्पेशल बैच एंड वी कैन से कि एकदम मतलब कि बेस्ट बैच बोल लो या फिर luckiest बैच बोलो या फेवरेट बैच बोल लो दो बोर्ड एग्जाम देन इंट्रोडक्शन ऑफ CUET and the whole एक्सपेरिमेंटल बैच The most refined batch.
and the whole roller coaster ride. So, what did you prioritize? Like, did you prioritize boats, or did you prioritize CUET, or how did you manage both of them? Yeah, so if we basically compare the difficulty level of both the exams, there's not a like big difference, but the difference is in the conceptual types of questions. For example, in boards, if you do basically the previous year questions, then you will get a very good idea of the level of the questions, and almost same type of questions are repeated every year. But in CUT, the questions are from very depth. For example, let's take example of a accountancy exam. Uh, in accountancy, the previous year questions are like more than enough. But in CUT, you must know the very depth of the basically subject. Naman? तो दोनों दोनों में एक चीज सेम थी, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। इफ यू अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दोनों एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करना चाहिए। Concept is the key, rightly said. So there are Yeah. like three sections in CUET, matlab general test mein, which is the first one is QA, that is quantitative aptitude, verbal ability, sorry, not verbal ability, general test, and logical reasoning. So what were your strategies to follow the same? Like, how did you strategize कि maximum marks हम score कर सके? Because GT में there are like 75 questions, from which you have to attempt a total of 60 questions, and you get just 1 hour for it. So was the time enough for you? We'll start with Naman. तो टाइम तो इनफ था अगर आप मॉक्स की प्रैक्टिस करोगे, कि मैंने मॉक्स बहुत सारे किए थे तो मेरा टाइम तो मैनेज हो गया इजीली, ऐसी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। और प्रिपरेशन की बात रही तो मैंने प्रैक्टिस बहुत की है। प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट भी बहुत मेन की है, इस पे फोकस करो। और फॉर दी जी के मैंने एक एडिटोरियल पकड़ लिया अखबार का, तो मैं डेली उसको पढ़ता था। उससे मेरी वर्बल भी स्ट्रांग होती और मेरी जीके भी इम्प्रूव होती। सो या, तो मेरी One, सेम ये स्ट्रेटेजी थी। Bhuvan. Yeah. So I will advise you not only to basically read the tutorial, as Naman said, but I would like to something add in it. First, basically, see the review on the YouTube of the tutorial, and don't go for the random tutorials. Just see tutorials of Hindu, or you can also like check out from Indian Express. For LR and quants part, there are some specific topics in quants like geometry, heights and distance, time split distance, and in LR we have like family relation type questions. In such questions, generally case studies comes. So try to make the diagram of these questions and then solve the case study. So this you can easily basically answer 3 out of 5 questions without even using the pen. So this is a very time saving method. And for basically GK, try to combine the topics or basically compare link the topics of current and of basically static. Generally, questions come from that part. So for me, what did I do was, I for a fact knew कि मेरा जो GK part है that's not up to the pace, because I had given some of the entrances. मेरे को पता था कि GK is not my strong point. So I basically targeted LR and QA. तो मेरे को था कि मैं maximum जितने ज़्यादा questions QA and LR में करूँ, I had the चांस कि मैं उतना अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाऊंगी. सो QA एंड LR आर वेरी सिंपल. व्हेन वी टॉक अबाउट CUET एकदम डायरेक्ट आते हैं. दे जस्ट वांट यू टू अप्लाई द फॉर्मूला एंड डायरेक्ट आंसर आते हैं. यू कैन एक्चुअली टेक आउट द आंसर, मतलब ऑप्शन से भी आप निकाल सकते हो. सो डू यू ऑल अग्री, राइट? या, Yeah, I agree. Especially the point that you said answers from the options. That is very helpful, like time management. Maybe. Definitely. So, we gonna like every time we prepare for an exam, हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि इस सेक्शन के क्या इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है जो मैं कर लूँ तो 70% ऑफ माई वर्क बिकम्स ईजी. क्योंकि CUET इज एन एग्जाम जहाँ पर अरिथमेटिक जो है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन वी टॉक अबाउट QA. तो भुवन, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि QA में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो कि बहुत रेपिटेटिव थे?
ठीक है, so the top repeated topics basically number system, especially LCM, या statement questions, train questions in time speed distance, successive discount questions, practicing distance. These are some repetitive topics. एग्जैक्टली एंड बहुत ही सिंपल थे, लाइक इट वाज जस्ट Yeah. अप्लाइंग द फॉर्मूला. Hmm. या बहुत बेसिक पेपर था. So, Naman, what were the repetitive topics for LR? For me, it was arrangement and data sufficiency. Yeah, I think यही था मेरे में. और मुझे याद नहीं है. ये स्लॉट्स टू स्लॉट्स डिफर करता है, बट क्यूए में एज भुवन सेड कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ऐसे परसेंटेजेस, ये सब सारे टॉपिक्स रेपिटेटिव होते Yeah. हैं. एल फॉर Basic LR arithmetic इट्स, topics. yeah, simply just focus on arithmetics. For LR it's like family tree, blood relations, फिर analogies जो होते हैं, डायरेक्शन एंड सेंसेस, ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये बहुत ही रेपिटेटिव हैं. फॉर जीके दे देयर वर लाइक सम क्वेश्चंस जो कि बहुत ज्यादा सब में ही रेपिटेटिव थे, दैट वर डांसेस, लैंग्वेजेस, कैपिटल्स. तो उसमें से आपके 5 से 6 क्वेश्चंस जो हैं मैच द फॉलोइंग में या डायरेक्ट क्वेश्चन में ऐसे ही थे, एंड मोस्ट ऑफ द स्लॉट्स में ये ऐसा ही था, राइट? यस. And in GK, I would like to Yeah, add the questions from singles, awards, books. These were also repetitive. and most of the question are from current affairs. Current affairs पे focus करो. So सो गाइज, what is your take कि मॉक्स कितने important होते हैं टू appear, like to prepare for an exam like CUET? ओके, सो जैसे कि सीईटी का जीटी हुआ था, उसमें 60 क्वेश्चन करने 60 मिनट में. तो अगर तुम लोग मैथ्स नहीं करोगे तो तुम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर पाओगे कि तुमको कैसे स्ट्रेटजी, कैसे सॉल्व करना है पेपर, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए. ये सब तुम जब भी सीख पाओगे जब तुम मॉक्स सॉल्व करोगे. मॉक्स से तुम्हारी इंप्रूवमेंट होगी. तुम कहाँ पे लैग कर रहे हो, तुम्हारा कौन सी टॉपिक वीक है, तुम उस पर वर्क कर सकते हो अपना. और तुम्हारे और तुमको पता लगेगा तुम कितने पानी में हो, तुम्हारा क्या स्कोर है. और तुम सबसे मेन, तुम पैनिक नहीं करोगे एग्जाम टाइम पे. अगर तुम मॉक्स नहीं करोगे तो तुम एकदम से जब पेपर सॉल्व करोगे तो तुम लोग पैनिक करने लगोगे. अगर तुम लोग मॉक्स करोगे तो तुमको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तुम इजीली पेपर सॉल्व कर सकते हो. अगर तुम पैनिक करोगे तो तुम सही क्वेश्चन को भी गलत कर दोगे. मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट तो है, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक्स प्रिपरेशन के लिए तो. भुवन. Yeah, so according to me, जैसे अभी फेब चल रहा है, तो अभी एकदम करेक्ट टाइम है आपको मॉक से देने के स्टार्ट करने के लिए. आई विल सजेस्ट आप अभी लाइक मार्च एंड फेब के अंदर मंथ में 5 मॉक्स लो, उसके बाद रेगुलरली एक मॉक्स लो, जैसे आपके बोर्ड से एग्जाम खत्म होते हैं. सॉरी ये फॉर मेन. इंटरप्टिंग, बट लाइक अभी बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं 15 मार्च तक. दिल लाइक अभी 15 फेब से 15 मार्च तक उनके बोर्ड एग्जाम्स हैं, मोस्ट ऑफ द ट्वेल्थ. तो आई डोंट थिंक सो इतना कोई फोकस करेगा अभी मॉक्स पे, बट डेफिनेटली बट मॉक्स. आई थिंक एक मॉक हफ्ते में दे तो कंपल्सरी है, वरना वो कंसेप्ट भूल जाते हो आप. मैंने भी एग्जैक्टली. बोर्ड्स में वीक में एक मॉक एटलीस्ट दिया ही था, स्पेशली जीटी का जहाँ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह यूज करते हो. No wonder you're sitting in Hansraj right now. So, as truly stated by both of them, mocks give you a true picture of the exam and बहुत help करता है. So, guys, please give a small tip to all of them appearing for CUET 2023. Move on. Yeah, so according to me, the key to crack CUT is just consistency, nothing more than that. Regularly give your mocks, revise your concepts, or that make a short notes of topics. You will ace CUT, like you will even get a single digit rank. Aman. या अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, अपनी एक खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ अपने हिसाब से जो तुमको सूट करती हो. और प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. Completely. So we'll conclude that. Consistency is the key. Practice as much as you can, make your concepts clear. Uh, and as said by Bhuvan, can you please repeat yours? What repeat what? Like the tip The that you. last line.
Yeah, I said just give as much more as you can. Consistency is the key. And if you make short notes of the topic, especially of the GT part, right? Make a formula sheet of every chapter. If you do all these things, you can even get a single digit rank in whatever course you want to take admission. So, like, for what did I do was I was also preparing for IPMAT. Unfortunately, I couldn't clear it. So, what I used to do was I used to prepare a separate formula book for all the chapters. तो IPMAT तो clear नहीं हुआ, but CUET का जो QA है, that was I remember scoring मैंने आई गेस 24 या 25 क्वेश्चंस होते हैं क्यूए के स्पेसिफिकली. आई रिमेंबर कि मेरे आउट ऑफ 25, जस्ट बिकॉज आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर अ टफर एग्जाम, मेरे 24 क्वेश्चंस जो है क्यूए में करेक्ट थे आउट ऑफ 25. सो बिकॉज आई यूज टू गिव लाइक कंटिन्यूसली, मैं मॉक्स देती थी, सो इट हेल्प मी अ लॉट डेफिनेटली. एक फॉर्मूला बुक भी बनाया था जिसमें आई यूज टू जस्ट राइट द फॉर्मूलाज जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के थे. सो आई गेस यू ऑल हैव डन द सेम, मतलब आपने भी बनाया ही Yeah. होगा ऐसे फॉर्मूला बुक्स वगैरह. Yeah. So I was basically I had also give NDA exam, National Defense Academy. For that I had made short notes and basically formula sheets for maths, like with 12 plus math. That actually helped me a lot. एंड वो कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, Uh, राइट? सो आई डोंट फॉरगेट इट. yeah. Yeah. Exactly. So, guys, this was it for the video. I hope you all understood it and will take the maximum from this video. So, we at the journey phase offer courses and mocks for all competitive exams ranging from IPMAT to CUET and NPAT. Our packages include sectional ebooks, sectional mocks, ebooks, and worksheets, in addition to live classes with experienced educators. What's next? We have student mentors at top colleges like Naman and Bhuvan. We have students from top colleges of Delhi University across India to guide through your preparation journey. The journey phase is with you and for you. Thank you for watching this video. All the best.